Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is mathematical techniques and mathematical principles. Mathematical techniques and mathematical principles. This is our today's lecture. This is topic number 1 or chapter number 1, physical quantities and units. This is a chapter name, and our today's lecture is mathematical techniques and mathematical principles. This is our today's lecture. So two things we are going to discuss in this lecture: the mathematical techniques and mathematical rules or principles. These two things we are going to discuss in this lecture, that is mathematical techniques and mathematical rules or principles. We are going to discuss these two things in this lecture. These mathematical techniques and rules and principles, they are very necessary because in physics we use the mathematics, so it is necessary for us to understand the mathematical techniques and mathematical principles and rule regulations. So mathematics is very closely related to physics. That's why it is necessary for us to understand the mathematical techniques and rules and principles. Now we use mathematical techniques in different areas of life. Also we use mathematical techniques in physics. So we must have the knowledge of the mathematical techniques. So there are different mathematical techniques and rules, and it is necessary for us to understand these mathematical techniques and rules. So there are different techniques. Number one, if we have 100, we write it 10 power 2. So there are two zeros, so we write it 10 power 2. This is 1000, there are three zeros, so we write it as 10 power 3. Here are six zeros, so this is equal to 10 power 6. We can write this thing as 10 power 6. If the number of zeros are 9, so we write it as 10 power 9. Here this is a very big number. Here are 12 zeros. So we write this number as 10 power 12. So very big number can be written in a very short way like this. This is a very large number. In a very short way we write this as 10 power 12. So 10 power 12. How we read it? 10 power 12. 10 power 9. 10 power 6. 10 power 3. 10 power 2. So a very big number can be written in a very short form like this. So this is a power of 10. So this is equal to what? 10 power 12. Because here are 12 zeros, so we write it 10 power 12. So number of zeros will be written as in the power, that is 12. So 12 zeros are written as in the power, that is 10 power 12. This is number of zeros. This 12 shows number of 0. This 9 shows number of zeros. So this is a technique which is used in different areas in physics and chemistry and other areas also. This is technique number 2. If the power of a number is 0, then that number is equal to 1. For example, 10 power 0 is equal to 1. 100 power 0 is equal to 1. 1000 power 0 is equal to 1. 2 power 0 is equal to 1. 2 power 0 is equal to 1. 4 power 0 is equal to 1. 5 power 0 is equal to 1. X power 0 is equal to 1. Y power 0 is equal to 1. A plus B power 0 is equal to 1. 2x plus y power 0 is equal to 1. So any number
or anything whose power is equal to 0, anything whose power is 0, that is equal to 1. You can see here the power of all these things is 0, so they are equal to 1. Here the powers are 0, so they are equal to 1. So this is a technique which is used. Here is a third point, that any number multiplying with 1, we get that number. For example, 2 multiplying with 1, answer is 2. 4 multiplying with 1, answer is 4. 10 multiplying with 100 multiplying 1, is answer is 10. 1000 multiplied by 1, answer is 1000. 6000 multiplied with 1, answer is 6000. So if a number is multiplied with 1, so answer is that number. The number which is multiplying to 1, the answer is that number. You can see here. Next point, any number multiplying with 0, the answer is 0. For example, 2 multiplying with 0, answer is 0. 6 multiplying with 0, answer is 0. 100 multiplying with 0, the answer is 0. This is another point. You note it. Next is, for example, 2 multiplying with 10, the answer is 20. Because 2 will multiply with 1, the 1 0 will be here. So the answer is 20. 2 multiplying with 100, the answer is 200. So it means that what are the number of zeros here? We write here. Here are 2 zeros, here we write 2 zeros. So 2 will multiply with 1. So same is the case, 2 multiplied by 1000 is 2000. The same way 48 multiplying with this number, how many zeros are here? 5. So here we write 5 zeros. And 48 into 1 is 48. You note it. Next point, 20 multiplied by 1000. So total zeros are 1 0 and 3 0. 4 zeros, here we write 4 0. And 2 multiplying with 1 is 2. Here is 400 multiplied with 10,000. So here are 2 zeros and here are 4 zeros. Here we write 6 zeros. And 4 multiplied with 1 is 4. So this is the answer. The same way 10 multiplying with 1000 is 10,000. So 3 zeros and 1 0 is 4 0. 1 into 1 is 1. The same is case here. Here is number 3000. We write it as 3 multiplied by 1000. We can write this number as this. And 3 is written here and 1000 is written in the form of 10 power 3. So this number can be written as this number. This number can be written as this number. Also 7000, we can multiply it like this. 7 into 1000, and 7 is written here. 1000 is written as 10 power 3. So this number can be written as this. Also this number is a very big number, so it can be written as like this. And then 12 is here. Here are 6 zeros. We can write 10 power 6. You note down. Next point, this is a very big number. This can be written in this form. 2 into this very big number, 6 zeros. And then 2 is written here. And this number can be written as 10 power 6. This is the one way of writing this number in this form. So this number can be written as like this, 2 into 10 power 6. Or we can write it as 20 into these 5 zeros. And this 20 is written here and 5 zeros are written as 10 power 5. Or we can write this number in this form, 200 into 10,000. So 200 is written here, 10,000 is written as 10 power 4.
So this number can be written in this form, or in this form, or in this form. So there are different forms. You note down it. Also, this is a very big number. This can be written as this, and 570, and these are 6 zeros, 10 power 6. Or this number can be written as 1 0 is written here and 5 zeros are here. So this can be written as this, and these 5 zeros are written as 10 power 5. So this number can be written as this. Or we can write it here, 3 zeros are here and 3 zeros are here. So this number is written here, and these 3 zeros are written as 10 power 3. So this number can be written as in this form, or this form, or this form. So these are different forms. Next point, if the numerator of a number is 0, then answer is 0. For example, 0 power 10 is 0. 0 power 3 is 0. 0 power 1000, 0 divided by 10 is 0. 0 divided by 3 is 0. 0 divided by 1000 is 0. And 0 divided by x is 0. 0 divided by x plus y is 0. So if numerator is 0, then answer is 0. Here numerator is 0, so answer is 0. Here is a symbol, it is called infinity. Infinity means very, very large number. Very, very, very large number. So this infinity shows a very, very large number. So if a number is divided by 0, the answer is a very, very large number, and we call this number as infinity. This is infinity. Infinity means very, very large number. 5 divided by 0 is infinity. 1000 divided by 0 is infinity. X divided by 0 is infinity. Y divided by 0 is infinity. So this expression divided by 0 is infinity. So anything divided by 0, the answer is infinity. Next is if the power of anything is infinity, then answer is infinity. For example, x power infinity, the answer is infinity. 6 power infinity, the answer is infinity. 100 power infinity, the answer is infinity. 1000 power infinity is infinity. This expression power infinity is infinity. So if the power of anything is infinity, the answer is infinity. You note down this. Next is if infinity is added to any number, then answer is infinity. For example, infinity plus 8 is infinity. Infinity plus 50 is infinity. In the same way here, infinity is added, so answer is infinity. So x plus infinity is infinity. So if infinity is added to any number, the answer is infinity. Here, if we subtract infinity from any number, the answer is infinity. Here infinity, 100 minus infinity is infinity. Or if we subtract any number from infinity, then answer is again infinity. Infinity means a very large number. Next number, if 1 by 10 is written as 0.1, 1 by 100 is 0.01, 1 by 1000 is 0.001, 1 by 10,000 is written as 0.0001. Same is the case here. 2 divided by 10 is 0.2, 2 divided by 100 is 0.02, 45 divided by 100 is 0.45, and this is a very big number. 72,956 divided by 10,000 is written as
0.2956. So here are 4 zeros and here are 4 number. So after 4 number here we write point. So these are 4 numbers and these are 4 zeros. So after 4 numbers, 4 zeros and 4 number. After 4 number here we write point. So this is a technique. So such type of numbers can be written as in the point form like this. Also these are the number fractions. In the point form these can be written as like this. Here is a 3.5. How we remove the point. So in place of point here we write 1, and after point here is one number, so here we write 1 0. So this can be written as 35 by 10. How we write this? In place of point here we write 1, and after point here there are 3 numbers, so here we write 3 zeros. So this can be written like this. And this number after point we have 4 digits, so here we write 4 zeros. So this can be written like this. So this is number 43.25. This can be written like this. In place of point here we write 1. After point there are 2 numbers here, so here we write 2 zeros. So this can be written like this. So here again this 100 can be written like 10 power 2. And here 43 125, and this 10 power 2 is plus, but if we shift it to the numerator it will become minus 2. So this number can be written like this. This number can be written like this. Also this number can be written as like this. We remove the point and we write it here 1000, and 1000 can be written as 10 power 3. If we shift this 10 power 3 to a numerator, then power will be minus 3. So this number can be written as like this. Also this number can be written as like this. Here are 5 digits, so here we have 5 zeros, and this can be written as 10 power 5. And this 10 power 5, when we'll shift to the numerator, it will become like this. So this number can be written as like this. So here is a number. After point we have 5 digits, so here we write the 5 zeros, and this number can be written as like 10 power 5. And when we shift 10 power 5 to the numerator, it will become 10 power minus 5. So this number can be written as like this. Also here we have the 5 digits, so here we have written 5 zeros. If we write here 3 zeros, then this point will shift here between 2 and 1, because when we write 3 zeros, then this point will shift between 2 and 1. And this 1000 can be written as 10 power 3, and this 10 power 3 can be written in the numerator as 10 power minus 3. So here we have shifted a point through the 3 digits from this place to this place. So when we'll shift through 3 digits, here we write 1000, that is 10 power 3, and this will become as 10 power minus 3. Here we have written 4 zeros. It means that we have shifted point here between 1 and 4, and this 10,000 can be written as 10 power 4, and when we shift 10 power 4 in the numerator, it will become 10 power minus 4. So how much digits we are going to shift the point, that much number of zeros will be right here. So here we have shifted the point to the 4 digits from this point to this point.
So through 4 digit here, so here we write 4 zeros, and this number can be written as 10 power 4, and then it can be written as like this. So this number can be written as like this. So there are three different ways that is number is same. This number can be written as this. This number can be written as like this, and this same number can be written as like this, and this same number can be written as like this. So number is here same, here, 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 but we write in different form, this form or this form or this form. So these are the different forms of the same number. Number is same, but forms are different. Same number can be written as in different forms. You can note down. So here is a number multiplied by 10 power 18. And this power is positive, plus 18. So this point is here. If we shift this point in this direction, then this number will decrease. So here we are going to shift. So here we are going to shift this point through the 5 digits from this point to this point. So this power will decrease through 5 here, 13, because we are going to shift this point through 5 digits to this point. So this power will decrease by 5, that is 13, 18 to 13. And if we are going to shift this point through 6 digits from this point to this point, then this power will decrease through 6 digits, that is 12, 18 to 12. And if you are going to shift this point through 3 digits from this point to this point, then this power will decrease through 3 digits, that is from 18 to 15. And if you are going to shift this point in this direction from this point to this point here, then this power will increase from 18 to 20. And if we are going to shift this point through from here to this point, 4 number in this direction, then this will increase through 4 number. So for a positive power, this is a positive power 18. If we shift the point in this direction, this power will decrease like this, like this, like this. And if we are going to shift this point in this direction, then this power will increase like this. Power has increased. Also here power has increased because we have shifted the point in this direction. So this is a rule for the positive power. For the positive power, if we shift the point in this direction, this power will decrease. If we shift the point in this direction, this power will increase. You can see in this case. These are all the cases. Now this is a case for a negative power. This is a number. Here point is here between 8 and 5. If we shift the point in this direction from this point to here, then this number will decrease from minus 17 to minus 20. So if the point is shifted in this, then this power will change like this. Here again, this is the same number. Point is shifted. Now in this direction, if this point is shifted in this direction, then this power will change like this, minus 17 to minus 21. Through 4 digits, we have shifted this point. So here the power will change by 4 like this. Again here, the point is shifted in this direction. The point is shifted from here through 9 digits in this direction. This power will change like this from minus 17 to minus 8. And here the point is shifted through
the 4 digits in this direction, from this point to this point here, this will change through 4 minus 13. So how the negative, here in this case power is negative, how the negative power is changing, you can see in these cases. So here power is negative, negative power how is changing? If point is shifted in this direction, then this will go up, and if a point is shifted in this direction, then power will go down. You can see like this. So here, when power is shifted in this direction through 4 digit, then power will change like this. Here again, the power is shifted in this direction through 9 digits, the power will change like this. Here again, the power is shifted in this direction, this will change like this. So you can see this case. So our next case is algebra. We are going to study different principles of algebra, and these are different principles of mathematics. For example, we have 7x power 5. 7x power 5. How we read it? 7x power 5. Here 7 is coefficient, x is base, and 5 is power. These are different things. Power, base, coefficient. Here we read it 4x power 9. 4x power 9. 4 is coefficient, x is base, and 9 is power. Here 12t power 15. 12t power 15. 12 is coefficient, t is base, 15 is power. You can write, you can see it. Base, power, coefficient. 3 things. These are the names. These are used in algebra. Here is another principle of algebra. If bases are same, then powers are added. Here base is 2, here base is 2. So bases are same. So powers are added. So we write it like 2 power 5 plus 8. Powers will add 5 plus 8. So we write it 2 power 13. So answer of this is this. Here again bases are same. Base is 6 here, base is 6 here. So power will be added. 6 power 4 plus 10. This is 14. So here again base is 7 same in both the cases. So power will add and we write it 7 power 12. Here base is same. So we write it 15 power 9. 6 plus 3 9. Here base is same, x, base is same. So we write it x power 6 plus 8, 14. So when bases are same, then powers are added. Again here bases are same, then power are added minus 2, minus 5, minus 7. Here base is same, that is 3 and 3. So powers are added minus 9 plus minus 4 is minus 13. Here power is added minus 3, minus 16, minus 19. Here base is same, x, powers are added minus 6, minus 8, minus 14. So when bases are same, then powers are added. This is a principle of algebra. Next point of algebra, if power is positive in the denominator and when we shift it in the numerator, it will become negative. Here is positive, but if we shift it to the numerator, then power will become negative. So 10 power 2 will become 10 power minus 2. Here 10 power 5, it will become 10 power minus 5. So when power is shifted from denominator to numerator, the positive power will become negative. Here 10 power 12, and this will shift to 10 power minus 12. X power 9, it will change to x power minus 9. Here, if the power is positive in the numerator, then it will shift to minus power when we go to the denominator. Here power is positive 8,
but when we shift it to the denominator, it will become negative 8. Here is positive 14 power. When we shift it to the denominator, it will become negative 14. So this is equal to this. Here is positive. When we shift to the denominator, it will become negative minus 19. Here is 15, but here is minus 15. Same is the case here. When it is here negative power, but it will become positive when we shift to the denominator. Here is negative, but here is positive. It is negative, but here is positive. Minus 9 plus 9. And if the power is negative in the denominator, then it will become positive in the numerator. If we shift it to the numerator, it will become plus 7. Here is minus 16, here is plus 16. Here is minus 24, here is plus 4, plus 24. Here is minus 5, here is plus 5. Again here, when bases are same, then powers are added. Here base is x, here base is x. So here we write x and powers are added. Minus 5 plus 9. And minus 5 plus 9 is plus 4. So x power 4. Answer of this is this. Here again bases are same. So powers are added. Minus 8 plus 13 is 5. 6 power 5. So answer of this is this. In the division case, in the numerator, the bases are same, and denominator, the bases are same. So here bases are same, that is x and x. So powers are added. 5 plus 9 is 14, x power 14. Here bases are same, that is y and y. Again, powers are added. 8 plus 3 is 11. So answer of this is this much. Next is here x power 8 and x power 3. So bases are same both in the numerator and denominator, but if we shift this power to the numerator, it will become minus like this. Here is positive. If we shift it to the numerator, it will become negative 3. So x power 8 minus 3. So x power 5. Again here is negative. If we shift it to the numerator, it will become positive. Here it was positive. If we shift it to the numerator, it will become negative. But here is it negative. If we shift it to the numerator, it will become positive. So x power 9 plus 4, x power 13. And here, if we shift the power to the denominator, it will become negative. Here 6 is positive, but if we shift it to the denominator, it will become negative. So x power 8 minus x power 6. So x power 8 minus 6. So 1 over x power 2. So here power is positive, that is 6 plus 6. But it will become negative when we shift it to the denominator. So the answer of this is this much. Here is another thing. If one thing is positive on one side of the equation, it will become negative on the other side. Here 4 is positive, but it will become negative when we shift it to the other side. So 5 plus 4 is 9, and 5 is equal to, when we shift the 4 on the other side, it will become negative. Minus 4 here. Here x plus y is equal to z. X is equal to y is shifted on the other side, it will become negative. If anything is negative on one side, it will become positive on the other side. Here 2 is minus, but when we shift it to the other side, it will become positive. So 7 is equal to 5 plus 2. So x minus y is equal to z, and x is equal to z plus y, because when y shifts to the other side, it will become positive.
Here is another thing. If one thing is multiplying on one side, it will divide on the other side. 4 is multiplying here, but on the other side it will divide. So we can write it like this. Here B is multiplying on this side, but it will divide on the other side. So B is multiplying here, but on the other side it will divide like this. So here are three things, x, y, z. They are multiplying. If we shift y, z on the other side, they will divide, because on this side they are multiplying, but on the other side they will divide like this. Here is another thing. If one thing is dividing on the one side, it will multiply it on the other side. Here is 3 is dividing, but when we shift it to the other side, it will multiply here. Also, B is dividing here. Also, B is dividing here, but on the other side, it will multiply. Both of them here are dividing, but on the other side, they will multiply like this. Here is another thing. When two positive numbers are multiplying, then the answer is positive. And when two negative numbers are multiplying, then again the answer is positive. But if one number is positive, second is the negative, then the answer is negative. And first is negative, second is positive, again the answer is negative. So when both the numbers are positive, the answer is positive. When both the numbers are negative, then the answer is positive. But if one of them is negative, either this is negative or this is negative, then the answer is negative. So this is applied in mathematics and algebra. These are different formulae used in algebra. A plus b whole square is equal to what? A square plus b square plus 2ab. A minus b whole square is equal to what? A square plus b square minus 2ab. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. This is a formula which is these are the formulae which are applied in algebra. Also, these are the formulae. A plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. A cube minus b, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. These are the formulae also used in algebra. Also, these are the formulae which are used in algebra. These are the formulae which are used in algebra. So these are formulae which are used in algebra, you can see. So in our today's lecture, we have discussed different mathematical techniques and principles and rule regulations. The purpose of this lecture is the introduction with mathematics, because mathematics is used in physics and different areas of physics. Also, these formulae are used, mathematical techniques and principles are used in physics, chemistry and other sciences also. So we must have the knowledge of mathematical techniques and principles, because mathematics is the mother of all sciences. We must have the command over mathematical principles and rule regulations. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, या टॉपिक 1, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट. हमारा आज का लेक्चर है मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स. इसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक, मैथमेटिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स. ये क्या क्या हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंसेज में यूज़ होती है. लिहाजा मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और रूल्स और प्रिंसिपल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है हमें, इसलिए ये लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं.
तो मैथमेटिक्स की टेक्निक मुख्तलिफ़ एरियाज़ में यूज़ होती हैं और फिज़िक्स में भी यूज़ होती हैं, इसलिए मैथमेटिक्स की टेक्निक का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसकी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। अब मसलन पहला ये है कि मसलन 100 लिखा हुआ है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 ज़ीरो हैं तो 10 पावर 2 लिखेंगे। इस तरह ये नंबर है 3 ज़ीरो हैं तो 10 पावर 3 लिखेंगे। 6 ज़ीरो हैं तो 10 पावर 6। 9 ज़ीरो हैं तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। 12 ज़ीरो हैं तो इस नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। तो बड़े बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ये एक टेक्निक जो यूज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होती है। तो ये जितने जितने ज़ीरोज़ हैं उतना पावर बनाई जाती है। मतलब 12 ज़ीरो है, 12 ज़ीरो है तो पावर 12 होगी। ये 12 ज़ीरो है तो पावर 12 लिखेंगे। यहाँ 9 ज़ीरो है तो पावर 9 है। यहाँ 6 ज़ीरो है तो पावर 6 होगी। तो इस बड़े बड़े नंबरों को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिखते हैं। ये एक टेक्निक यूज़ होती है। इस तरह किस चीज़ की पावर अगर ज़ीरो है तो चीज़ 1 होती है। मतलब 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। इस तरह 2x प्लस वाई पावर 0 इज़ 1। जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो चीज़ 1 के बराबर हो जाती है। इस तरह जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। मसलन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आ जाता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 100 आ जाता है। 6000 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6000 आ जाता है। तो जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आंसर आ जाता है। इस तरह जिस चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। ये इस तरह अगर किसी नंबर को 10 या 100 या 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और जितने ज़ीरो यहाँ हैं तो वो इधर आ जाएंगे। मसलन यहाँ 4 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो इधर आ जाएंगे। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 इधर आ जाएगा। इस तरह 48 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 48 1 से मल्टीप्लाई किधर आ जाएगा। यहाँ कितने 5 ज़ीरो, 5 ज़ीरो इधर आ जाएंगे। इस तरह ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो अब देखें इधर 1 ज़ीरो, इधर 3 ज़ीरो, इधर टोटल 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। इस तरह देखें 600 और 9000, 2 ज़ीरो यहाँ है, 3 ज़ीरो यहाँ है तो यहाँ 5 ज़ीरो। 6 9 से मल्टीप्लाई 54 आ जाएगा। तो इस तरह से जितने ज़ीरो टोटल इधर हैं उतने इधर आ जाते हैं और ये नंबर जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। इस तरह ये एक नंबर है, इसको पहले इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फिर 3 अपनी जगह और 1000 को इस तरह लिखते हैं। तो इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह 7000 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह ये एक बड़ा नंबर है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। दरमियान में ये स्टेप, पहले इस स्टेप में जाएंगे फिर इस स्टेप पे आएंगे। इस तरह ये एक नंबर है, इसको मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं लिखने की। इस नंबर को देखें, पहले इस तरह लिख के आगे ये फॉर्म बना दी, फिर इस नंबर को इस तरह लिख के आगे ये फॉर्म बना दी, ये नंबर है इसको इस तरह लिख के आगे ये फॉर्म बना दी। तो एक ही नंबर को मुख्तलिफ फॉर्म में इस तरह या इस तरह या इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह आगे ये है, इस नंबर को देखें इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह दरमियान में स्टेप दिखाया हुआ है। इस तरह अगर किसी नंबर का नोमरेटर ज़ीरो हो जाए तो आंसर ज़ीरो होता है। मसलन नोमरेटर ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो, नोमरेटर ज़ीरो आंसर ज़ीरो। इस तरह यहाँ देखें ये ज़ीरो हो जाता है। इस तरह ये एक सिंबल दिया है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत लार्ज नंबर, वेरी वेरी बिग नंबर। इन्फिनिटी ये चीज़ होती है, ये इन्फिनिटी इसको कहते हैं। ये बहुत बड़े नंबर को शो करता है। तो जब किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही बड़ा आंसर आ जाता है। 5 डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, 1000 डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो जिस चीज़ का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। यहाँ देखें डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है।
फिर किसी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है। मतलब 6 पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, 100 पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। मतलब ये नंबर इसकी पावर ये एक्सप्रेशन इसकी पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। फिर इन्फिनिटी अगर किसी चीज़ में ऐड हो जाए, इन्फिनिटी अगर किसी चीज़ में ऐड हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब 8 प्लस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, 1000 प्लस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। फिर अगर किसी नंबर से इन्फिनिटी को माइनस करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। फिर 100 माइनस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर किसी इन्फिनिटी से किसी नंबर को माइनस करें तो फिर भी इन्फिनिटी आता है। फिर इस तरह से कोई नंबर है 10 पे डिवाइड करें, मसलन 1 को तो इस तरह लिख सकते हैं, 1 को 100 पे डिवाइड करें इस तरह लिख सकते हैं, 1 को 10,000 पे डिवाइड करें इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह 2 को 10 पे डिवाइड करें इस तरह लिख सकते हैं। पॉइंट, इसमें पॉइंट को दिखाया गया है, पॉइंट 2 डिवाइड बाई 10 इज़ 0.2, 2 डिवाइड बाई 100 इज़ 0.02। इस तरह ये नंबर है, तो यहाँ 4 ज़ीरो है, तो लिहाजा 0.4 नंबर के बाद यहाँ लगेगा। ये 4 ज़ीरो है तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा। ये तो इन नंबरों को हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका भी है। ये 3.5 है तो पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो होगा। यहाँ पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है तो 3 ज़ीरो लगेंगे। ये इस तरह, इसको इस तरह लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद देखें 4 डिजिट है, 4 ज़ीरो लगेंगे यहाँ पर। इस तरह ये पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ये करते हैं। अब 100 को लिखते हैं 10 पावर 2, और 10 पावर 2 जब ऊपर आएगा तो 10 पावर -2 हो जाएगा। तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह ये है, तो पॉइंट को ख़त्म करें तो 1000 आएगा, 1000 को इस तरह 10 पावर 3 लिखते हैं, 10 पावर 3 ऊपर आएगा तो 10 पावर -3 बनेगा। इस तरह ये नंबर है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, 5 ज़ीरो लगेंगे, 10 पावर 5, 10 पावर 5 ऊपर आएगा 10 पावर -5 बनेगा। तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह एक ही नंबर है, मसलन ये नंबर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक ही नंबर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वही नंबर है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वही नंबर है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, तो एक ही नंबर को देखें, इस नंबर को पॉइंट को ख़त्म कर इस तरह लिखेंगे, ये पॉइंट को ख़त्म कर इस तरह लिखेंगे, फिर इसको इस तरह लिखते हैं 10 पावर 5 ऊपर आके -5। फिर अगर पॉइंट को ख़त्म करके नीचे, अगर हम पॉइंट को ख़त्म करें नीचे अगर 3 ज़ीरो लिखेंगे तो ये पॉइंट 3 नंबर इधर आएगा, यहाँ 2 और 1 के दरमियान आएगा, और 1000 को इस तरह लिखते हैं और ऊपर आकर 10 पावर -3 बनेगी, 10 पावर 3 ऊपर आकर 10 पावर -3 बनेगी। फिर इस तरह अगर इसके यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट को ख़त्म कर नीचे 4 ज़ीरो लिखते हैं तो ये पॉइंट 4 डिजिट इधर आएगा, मतलब यहाँ से उठ के इस जगह आएगा, तो ये 4 ज़ीरो लिखने से पॉइंट यहाँ 4 डिजिट इधर आएगा। फिर इसको इस तरह लिखते हैं और 10 पावर 4 ऊपर आकर -4 बनेगा। तो एक ही नंबर है, देखें यहाँ पर भी दिया हुआ है, इधर भी और इधर भी, लेकिन इसको यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह, ये देख लें। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई है, मतलब ये एक नंबर है 7 10 की पावर 18 है, और एक पावर पॉजिटिव पावर है। अगर पॉइंट को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो पावर के अंदर कमी आएगी। देखें, पॉइंट यहाँ से उठा के हम इस जगह ले गए, 5 डिजिट हम इधर ले गए, तो पावर में 5 की कमी आएगी। पॉजिटिव पावर जब होगी तो उसमें कमी आएगी जब पॉइंट इस तरफ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, जब इधर जाएगा तो अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट इधर जाने से पावर में कमी आएगी। अब 5 डिजिट हम इधर से यहाँ पे ले गए तो यहाँ 5 की कमी आ गई है। फिर इस तरह अगर हम यहाँ से उठा के इस जगह ले गए, 6 डिजिट यहाँ से उठा के इस जगह ले गए, देखें
तो यहाँ 6 की कमी आएगी। फिर अगर इसको यहाँ से उठा के 3 डिजिट इधर लेके जाएंगे तो 3 की कमी आएगी। ये पॉजिटिव पावर, अगर पॉजिटिव 18 है तो पॉजिटिव पावर का ये असूल है, ये असूल है, ये प्रिंसिपल है। और अगर इस पॉइंट को उठा के हम इधर लेके आएंगे इस तरफ, तो इस पॉजिटिव पावर में इजाफा होगा, 18 से बढ़ के 20 होगी। देखें 2 नंबर उठा के हम इधर से इधर ले आए इस जगह, तो पावर में 2 का इजाफा हो गया। फिर इसको उठा के और हम यहाँ से इधर लेके आएंगे, 4 नंबर उठा के यहाँ से इधर लेके आए तो 4 का इजाफा होगा, ये देख लें। तो ये पॉजिटिव पावर का असूल मैंने आपको बताया। फिर अगर पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर का असूल क्या है? पॉइंट मतलब यहाँ पर है, पॉइंट अगर उस तरफ जाएगा तो पावर -17 से बढ़ के -20 हो जाएगी। देखिए 3 डिजिट यहाँ से उठा के हम इस जगह ले गए तो पावर में 3 जो है ना -17 से -20 हो जाएगी। फिर अगर इस पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे तो पावर जो है 17 से -13 पे चली जाएगी। 4 डिजिट लेके आए तो ये नंबर 17 जो है कम होके 13 पे आ जाएगा। फिर ये देखें यहाँ से उठा के इधर लेके आए, यहाँ पे 9 डिजिट उठा के इधर लेके आए तो -17 वाला नंबर कम होके 8 पे आ जाएगा, ये -8 बन जाएगा। फिर यहाँ पे फिर देखें इधर लेके आए तो पावर -13 हो गई। तो नेगेटिव पावर का असूल ये है कि पॉइंट उधर जाएगा, ये देखें पहले केस में पॉइंट उधर जाएगा तो ये नंबर 17 बढ़ के 20 हो गया, यानी -17 से -20 में बदल जाएगा। और अगर पॉइंट इधर आएगा तो ये नंबर 17 कम होकर 13 पे आएगा, तो पावर -17 से -13 पे आएगी। सेकंड पोर्शन हमारा इस चैप्टर का अलजबरा है, जिसमें मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ प्रिंसिपल, अलजबरा के प्रिंसिपल और रूल्स आपको बताए जाएंगे। बस ये एक चीज़ है 7x पावर 5, 7x पावर 5, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 7x पावर 5, इसमें 7 क्या है? कोफिशिएंट, x क्या है? बेस, 5 क्या है? पावर। इस तरह इसको किस तरह पढ़ते हैं? 4x पावर 9, 4 क्या है? कोफिशिएंट, x बेस, 9 पावर, 4 क्या है? कोफिशिएंट, x क्या है? बेस, 9 पावर। इस तरह यहाँ क्या है जी? इसको पढ़ते हैं 12t पावर 15, 12t पावर 15, इसमें 12 क्या है? कोफिशिएंट, t क्या है? बेस, 15 क्या है? पावर। अब इसमें क्या एक और चीज़ दिखाई कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है। मसलन बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। दोनों बेसेस में से एक बेस लिखेंगे और पावर ऐड करेंगे, 5 + 8 तो ये बन जाएगा 2 पावर 13। तो इसका आंसर होगा 2 पावर 13। यहाँ बेस 6 है, दोनों में पावर ऐड हो जाएंगी तो आंसर होगा 6 पावर 14। यहाँ देखें बेस सेम है, पावर ऐड होगी 7 पावर 12। बेसेस यहाँ सेम है, पावर ऐड होगी 6 + 3 9। यहाँ बेस दोनों का x है, सेम है, तो x पावर 6 + 8 14 हो जाएगा। तो जब बेसेस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि बेस जब सेम है, यहाँ 8 बेस है, इधर भी तो पावर ऐड होंगी, -2 और -5 -7। यहाँ बेस सेम है 3 3, पावर ऐड होंगी -9 -4 -13। इसी तरह यहाँ भी बेस सेम है 12, यहाँ भी तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब इस तरह अगर पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस, ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस, ये पॉजिटिव ऊपर माइनस। इस तरह ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे जाके माइनस हो जाएगी। ये देखें ऊपर पॉजिटिव +14 है, नीचे -14। यहाँ भी देखें नीचे 14 माइनस, ऊपर +15 नीचे -15।
अब ऊपर अगर पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। देखें, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर -25 नीचे +25, ऊपर -9 नीचे +9। इस तरह नीचे अगर पावर नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, नीचे -24 ऊपर +24। यहाँ भी देख लें। अब यहाँ भी दिखाया है कि बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड होगी, लेकिन एक की पावर माइनस है दूसरे की प्लस है, तो क्या होगा? x लिखा है तो -5 + 9 इज 4, x पावर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 6। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा? 13 - 8 5, ये होगा। अब यहाँ देखें, न्यूमरेटर में बेस सेम है x, डिनोमिनेटर में बेस सेम है y, तो ऊपर पावर अलग ऐड होंगी, ये 14 होगा, नीचे अलग ऐड होंगी y पावर 11, ये होगा। फिर अगर ऊपर x है, नीचे भी, ऊपर भी बेस x है, नीचे भी x है, तो नीचे अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस होगी, तो इसको लिखेंगे x पावर 8 -3, ये 3 ऊपर जाके माइनस होगा, तो x पावर 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका ये होगा। फिर यहाँ पे देखें, नीचे अगर नेगेटिव पावर, ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगी, तो क्या होगा? x पावर 9 + 4 x पावर 13। फिर ऊपर अगर पावर पॉजिटिव, नीचे आकर नेगेटिव बनेगी, तो नीचे x पावर 8 -6 x पावर 2 हो जाएगा ये। ये सारे अलजबरा के रूल रेगुलेशन है। ये अलजबरा के अंदर सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई होते हैं ये। फिर एक चीज़, अगर एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव होती है, मसलन 5 + 4 इज 9, 4 इधर प्लस हो रहा है, 4 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखें, 5 = 9 - 4, x y इधर पॉजिटिव है, उधर y जाके नेगेटिव हो गया। इक्वेशन के एक तरफ अगर एक चीज़ पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाती है, ये y इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो गया। फिर अगर एक चीज़ एक तरफ, इक्वेशन के एक तरफ नेगेटिव है, मसलन 2 नेगेटिव है, ये 2 इक्वेशन के एक तरफ 2 अगर नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके क्या बन गया? पॉजिटिव। फिर इस तरह y इधर नेगेटिव उधर जाके क्या बन गया? पॉजिटिव। तो इक्वेशन के एक तरफ एक चीज़ अगर नेगेटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव, और एक तरफ एक चीज़ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव बन जाएगी। फिर अगर एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होती है, मतलब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। फिर इस तरह b इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा। फिर इस तरह x y दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो एक चीज़ एक तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ये भी अलजबरा का असूल है ये। फिर अगर एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई। मतलब 3 इधर डिवाइड हो उधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये b इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इस तरह x y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ये। फिर एक और चीज़, अगर दो प्लस नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर प्लस होगा। तो 2 × 5 10, आंसर प्लस होगा। अगर दो नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर फिर भी प्लस होगा। और एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है तो आंसर माइनस, और अगर ये माइनस है ये प्लस फिर भी माइनस। तो दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस, दोनों माइनस हैं तो फिर प्लस। लेकिन दोनों में से एक प्लस है एक माइनस, चाहे पहला हो या दूसरा हो, एक प्लस है एक माइनस तो आंसर माइनस में होगा। ये भी एक अलजबरा के अंदर चीज़ यूज़ होती है। फिर ये कुछ फार्मूलाई हैं जो यूज़ होते हैं अलजबरा के अंदर। a + b² = a² + b² + 2ab।
इस तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यूज़ होते हैं अलजबरा के अंदर। ये फार्मूला आप देख लें। इस तरह ये फार्मूला यूज़ होते हैं ए प्लस बी होल